Now, dear students, we will discuss the locus problem of a complex number. ये भी एनडीए का एक one of the important area in complex. Locus. Locus को आप in general क्या कहते हैं? Locus is an algebraic equation of some geometrical condition. किसी भी geometrical condition की जो algebraic equation होती है, that is known as locus. Correct? उसको कई language में जैसे set of points satisfying some geometrical condition is known as locus. यानी जो हमें गिवन कंडीशन दी होगी इसकी एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होगी, दैट इज व्हाट लोकस. सेम वे इन कॉम्प्लेक्स नंबर, सी इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ जेड प्लस जेड बार का मॉडुलस इक्वल्स टू जेड माइनस जेड बार के मॉडुलस इक्वल टू 2 है, तो देन जेड इज वेयर स्ट्रेट लाइन या अ सेट ऑफ 4 लाइंस, अ सर्कल या नन ऑफ दिस. दैट मीन्स जेड कहाँ पे लाई करेगी? ऑल ऑफ यू नो जेड इज अ पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट, करेक्ट? So let's say start with let z is x plus iy, correct? Z is x plus iy I took. Now first of all z plus z bar. So you know z bar is x minus iy, conjugate of z, clear? Which is x minus iy. So z plus z bar will be 2x, fine? Now we'll calculate z minus z bar, z minus z bar. If you subtract, then what will happen? 2iy, correct? So z plus z bar is 2x, z minus z bar is 2iy. Now we'll go to the given condition. Modulus of this 2x equals to modulus of 2iy, and this is given to be 2. ये दी हुई है, ठीक है? I believe ये this is plus, it is given in the question. Sorry, plus. This is plus given, plus है यहाँ, ठीक है? So now mod 2x plus mod 2iy equals to 2. So अगर मैं इसके 2 कांस्टेंट ले लूँ तो ये mod x प्लस यहाँ से भी 2 बाहर ले लिया, mod i ये ले लिया, ये mod y equals to 2. Can we write 2 get cancel, mod x plus mod y equals to 2. Mod i is 1. Magnitude of I. Mod i क्या होता है? Root under 0 square plus 1 square, which is 1. So mod i is 1. So now mod x plus mod y equals to 2. What it represents? So mod x plus mod y is 2 है, तो इनके चार फॉर्म होंगे इक्वेशन के. वो कैसे? पहला x plus y which is 2, second minus x plus y this is 2, then minus x minus y which is 2, then x minus y which is 2. So we have 4 set of lines. So a set of 4 lines is the correct answer. ठीक है, समझ के लीजिए. तो ये कैसा हुआ कि इस पे जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी आपने इंफॉर्मेशन निकाला, एंड नाउ वी केप्ट इट इनटू दिस कंडीशन. तो 2 कांस्टेंट mod x, 2 i भी बाहर ले लिया, mod i, mod a इंटू mod b प्रॉपर्टी से, 2 इंटू mod i इंटू mod y इक्वल्स टू 2 गेट कैंसिल. सॉरी, ये 1 हो जाएगा, करेक्ट? दिस इज 1, फाइन. 2 से डिवाइड हुआ, so all are 1. So the equations are x plus y1 minus x plus y1 minus x minus y1. So we have 4 set of lines of these are locus, correct dear? Z correct करना है, zx plus iy, z bar, and then whatever the demand given substitute there, and then you will have these 4 lines locus you will get. Now we'll see the next situation. Locus of the point z satisfying the equation z minus 5i upon z plus 5i equals to 1 lie on options है x axis, y equals to 5, circle, none. ठीक है, these are options. So locus of the point z satisfying this condition. So which one is the equation? Whether it is x-axis means y equals to 0, y equals to 5, या circle, या none of these. ठीक है? So we'll start with this. We'll suppose z equals to x plus iy. तो हमने क्या ले लिया है? Let z is x plus iy, correct? So now when you substitute here,
So it is x plus iy minus 5y upon x plus iy plus 5y is equals to 1. ठीक है, मॉड की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मॉड z1 अपॉन मॉड z2. सो x प्लस i y माइनस 5 अपॉन x प्लस i y प्लस 5 mod z1 upon mod z2. Now we'll take that side. So mod x plus I y minus 5 is equals to mod x plus I into y plus 5. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब मॉडलेस निकाल लेंगे. मॉडलेस क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर. ठीक है, एंड हियर इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 होल स्क्वायर. ठीक है, मॉडलेस वी हैव कैलकुलेटेड. मॉड है ना इसका, x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ वी स्क्वायर इट बोथ साइड. स्क्वायरिंग कर देते हैं. तो एक्स स्क्वायर और ये इनसाइड टर्म को भी एक्सपेंड कर देते हैं. So some term get cancelled. What left at the end? X square, y square, everything get cancelled. 20y equals to 0. Therefore y equals to 0. So y equals to 0 what says? X axis. ठीक है, y equals to 0 अपने को क्या बता रहा है? X axis. So x axis is the locus of this geometrical condition. If z satisfying mod z minus 5y upon z plus 5y equals to 1, then the locus is going to be x axis. ठीक है, z हमने x plus i में लिया, substitute here in place of z, mod z1 upon mod z2 property use किया, then cross multiplication, then we calculate the modulus of these two complex number, then we squared and then we simplified. The value came y equals to 0, and y equals to 0 what suggests? It suggests that it is an x-axis. That means the complex number z is lying on x-axis. So that is the locus of this problem. ठीक है डियर, चलिए एक और प्रॉब्लम पे आते हैं लोकस में. लोकस के प्रॉब्लम्स करते समय थोड़ा ध्यान रखना है कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू, और उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू प्रोसीड. ठीक है, मॉड है, आर्ग्यूमेंट है, क्या ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई है, एंड देन वी कैन प्रोसीड. लेट्स से वन क्वेश्चन. लोकस ऑफ पॉइंट जेड, लोकस ऑफ पॉइंट जेड satisfying the equation argument of z minus 1 upon z plus 1 is pi by 3 is. Options are straight line, circle, parabola and none. Correct? So now we have to find that locus, and that z is satisfying this geometry. So let solution देख लेते हैं. We'll start with, we'll take z something, z we have took x plus iy, correct? Z I have taken x plus iy. So argument of this, so argument of z minus 1, z plus 1 is given pi by 3. ठीक है, now you know the argument की property. Argument z minus 1, z argument z1 upon z2 is आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 कर सकते हैं, या पहले आप z की वैल्यू यहाँ डाल दें. सो x प्लस आई वाई माइनस 1, x प्लस आई वाई प्लस 1 इज पाई बाई 3. ठीक है, सो यहाँ पे देखो आप आर्गुमेंट ऑफ x माइनस 1 प्लस आई वाई, करेक्ट, माइनस आर्गुमेंट ऑफ x प्लस 1 प्लस आई वाई, कैन बी राइट पाई बाई 3. आर्गुमेंट फॉर्मूला है अपने पास, आर्गुमेंट z1 अपॉन z2 इज आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2. वी हैव सीन इन प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट z1 अपॉन आर्गुमेंट z2 इज आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2. ठीक है, नाउ so argument of this is going to be tan inverse y upon x minus 1,
correct, and minus tan inverse y upon x plus 1 is equals to pi by 3. ठीक है, अब ये tan inverse x minus tan inverse y का फॉर्मूला यूज कर लेंगे. ठीक है, so tan inverse y upon x minus 1 minus upon 1 plus y square upon x square minus 1 is pi by 3. Now tan inverse will send that side और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So this is xy plus y minus yx and plus y, correct, and इधर आ गया x square plus y square minus 1 equals to root 3. Tan pi by 3 is root 3. So some term get cancelled here. So left with 2y equals to root 3 times of x square plus y square minus 1. So finally root 3x square root 3y square minus 2y minus root 3 equal to 0. And this is nothing but what? Circle. X square और y square के coefficient same है. So it is a circle and there is no term of xy. xy की term नहीं है. So it is a circle. So given the given geometrical condition represents a circle, and you have seen the stage, you know tan inverse trigonometric function के result tan inverse x minus tan inverse y. Simplify this, cross multiplication, you will have the equation of circle. ठीक है, and you know how you can detect the equation of circle? Coefficient of x square equals to coefficient of y square. ठीक है, and there is no term of xy there, so it represents circle. So from the given geometry, this geometry of a complex number represents a circle. ठीक है, look at this argument of z1 minus upon z plus 1. We substituted z equals to x plus iy, correct. Then we use property argument z1 upon argument z2, this, and then we calculate the argument, amplitude, tan inverse y upon x, tan inverse y upon x, and then we use the formula of tan inverse x minus tan inverse y, and then you have simple algebra. Find here. So you have seen these couple of problems based on locus. So this is what it used to come in NDA. बेसिक ही आते हैं, डिफिकल्ट नहीं आते हैं, बट एक लेवल मैंने ये भी कर दिया कि आपको tan inverse x का पता है कंसेप्ट, so you can do it such type of a problem. Most of the time हमारे पास जो क्वेश्चन होता है locus में, those are circle, straight line, those are maximum time it comes. Sometimes ऐसे पूछा जाता है कि ये satisfy कर रहा है और what is the radius of the circle. तो ये तो श्योर होता है कि ये सर्कल है, तो इसका रेडियस आप निकाल लेते हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला से, करेक्ट. फाइंड हियर. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट portion, which is maximum and minimum of a complex number. Fine. This is the last segment of a complex number. किसी भी complex number की maximum और minimum value निकालना. I will provide you some problems based on locus, so that all of you try. Fine. So we will move now the maximum and minimum of a complex number. Fine here. For this, we have to remember the triangle inequality. Maximum and minimum of complex number. This is our last segment in a complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर के मैक्सिमम और मिनिमम कभी कभी एनडीए में पूछे गए हैं, सो वी मस्ट टू नो. नाउ सी, सो वी हैव वन ट्रायंगल इनइक्वालिटी दैट ऑल ऑफ यू नो. mod z1 plus mod z2 is, this is less than equals to mod z1 plus mod z2. अगर आप ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इफ यू रिमेंबर, दैट जॉब इज डन फॉर मैक्सिमम मिनिमम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. ठीक है. One more it is there.
जो कभी कभी यूज करेंगे हम, मॉड z1 माइनस z2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू मॉड ऑफ mod z1 minus mod z2. ठीक है, sometimes we use this result. ठीक है dear, so these two result if you remember, so maximum and minimum of a complex number we can calculate. ठीक है, now see the first problem we'll take. For any complex number z, the minimum value of mod z plus mod z minus 1 is 1, 0, 1 by 2, 3 by 2. For any complex number z, for any z, the minimum value of this mod z plus mod z minus 1. ठीक है dear, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए. z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, सो आप इस तरह के प्रॉब्लम में थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे. आप देखिए यहाँ पे ये mod z प्लस mod z माइनस 1 में स्प्लिट है. दैट मीन्स ये राइट हैंड साइड दिख रहा है अपने को, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पता कर ले अगर, तो जॉब डन. तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने अगर 1 ऐसे लिया 1, ठीक है, 1 को आप क्या लिख सकते हो, z प्लस 1 माइनस z लिख सकते हैं. ठीक है, z प्लस 1 माइनस z ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, अब z1 को मैंने z प्लस 1 माइनस z लिखा. अगर मैं इसकी मॉड की बात करूं, अगर मैं इसका मॉड करूं, ठीक है, सो मॉड 1 यू नो दैट इज 1, करेक्ट. मॉड 1 इज गोइंग टू बी 1. अब मैं इसको ब्रेक करूं तो ये कैसे ब्रेक हो सकता है, मॉड z, ये इस ट्राइंगल इनइक्वालिटी से ये z1 प्लस z2 समझे, ये z1 और इसको z2 ले लेते हैं, z1 z2. So mod z plus mod 1 minus z, can we write with this property, mod z plus 1 minus z. Now this is mod z plus, what we can write, z minus 1 also we can write. Mod of 1 minus z is similar as mod z minus 1. ठीक है, mod के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं. So mod z plus mod z minus 1 which is greater than equals to 1. ये 1 था यहाँ पे. ठीक है, सो दैट मीन्स mod z प्लस mod z1 क्या होगी, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1. सो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं क्या, सॉरी, ये मिनिमम वैल्यू चाहिए अपने को. क्या चाहिए अपने को, मिनिमम. तो ये 1 से बड़ी होगी, 1 के बराबर या बड़ी होगी. तो देयरफॉर mod z प्लस mod z माइनस 1 की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 1. सो 1 इज द करेक्ट आंसर. ठीक से ट्रायंगल इनइक्वालिटी को समझिए. ट्रायंगल इनइक्वालिटी अगर आप समझ गए देन इट इज सफिशिएंट. क्लियर है. गिवन चीजों को ध्यान में रखना है कि क्या गिवन दी, mod z प्लस mod z माइनस 1. तो मैंने 1 कंसीडर किया, 1 को मैंने फिर z प्लस 1 माइनस z लिया, फिर mod लिया, mod 1 इज 1, एंड इसको मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी से ब्रेक कर लिया. 1 माइनस z इज z माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1. So mod z plus mod z minus 1 is greater than 1. So minimum value क्या होगी, 1 से सारी वैल्यू बड़ी आएगी ये, तो मिनिमम इज 1. So mod z plus mod z minus 1 की मिनिमम वैल्यू इज 1. ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू का प्रॉब्लम देखते हैं. So maximum value of, next situation, maximum value of mod z plus 1 if mod z minus 4 is less than 3 is 4, 5, 6, none. ठीक है. Now what we have to find, maximum value of mod z plus 1 and z minus 4 is less than equals to 3 दी हुई है. ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं कि mod z plus 1, इसको मैंने यहाँ पे लिखा mod z plus 1. ठीक है, अब मुझे किसी तरह ये z minus 4 इसके अंदर क्रिएट करना है. ठीक है डियर, z minus 4, सॉरी z plus 4 दिया हुआ है, z plus 4.
इफ जेड मॉड जेड प्लस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3. सो अब मैं जेड प्लस 4 यहाँ कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? सो दिस जेड प्लस 4 माइनस में क्या डाल दूँ? -3. कैन वी राइट जेड प्लस 1 को? अब मैं इसको कैसे करूँगा डियर कि जेड प्लस 4 को z1 और इसको z2 कर लूँगा. दिस विल ट्रीट z1 एंड दिस इज एज ए z2. सो व्हाट विल हैपन? ये इनइक्वालिटी फॉलो करेगी. सो दिस इज मॉड z प्लस 4 एंड प्लस मॉड -3. कैन वी राइट? ठीक है, इसको मैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी से ऐसा लिख दिया, मॉड z प्लस 4 मॉड 3, और z प्लस 4 की वैल्यू क्या है? दिस इज 3. So this is 3 and this is 3. So less than equals to 6. That means mod z plus 1 is less than equals to 6. यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है? mod z plus 1 less than equals to 6. z plus 4 भी क्या है? less than 3 है. So we have kept it 3 here. Mod minus 3 is plus 3. So the maximum value of z plus 1 came 6. 6 is the correct answer. So dear, these are the problems based on maximum and minimum. I will provide you some questions for practice. ठीक है? So with this, all these topic we have finished in complex numbers. Next topic we will start the quadratic equation. So next class onwards we will start the quadratic equation. Fine? So आज मैं कुछ homework दूंगा. Those you all of you have to try. And any doubt let me know. I believe बहुत कम बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, तो आई थिंक सभी को करना चाहिए. ठीक है, वीडियो को गो थ्रू कीजिए, अच्छे से समझिए, और जो डाउट हो यू कैन आस्क. ठीक है डियर, चलिए टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू वेरी मच.